Hey, what's up? So, are we gonna do our first live stream? Okay, so आज बेसिकली क्या करेंगे? अब कैमरा वगैरह सेट कर लूँ. So basically आज हमें क्या करना है? We were gonna test Claude और Blender का combo जो कि अभी लॉन्च हुआ है कनेक्टर. वैसे तो काफी टाइम हो गया है. आई हैव ट्राइड इट थोड़ा बहुत लाइक उससे थोड़ा बहुत ज्योमेट्री नोट्स का सेटअप बनाया, थोड़े बहुत एक दो सीन बनाने का ट्राई किया था, बट आई डोंट थिंक फुल पोटेंशियल पे कभी ट्राई किया था, तो आज वो ही करेंगे. वी गोना सी कि क्लॉड कैन रिप्लेस 3D आर्टिस्ट एटलीस्ट, जो कि अफवाह फैलाई जा रही है. वी गोना डिबंक इट बट क्विकली. आई थिंक आई एम गोना पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम. एक सेकंड, एक स्टोरी डाल दूं जिससे पता चल जाए बाकी लोगों को भी. पप, 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 पप. इतना अच्छी शक्ल तो आती नहीं है मेरी जितनी मैंने ट्राई मारा, बट ठीक है. कॉपी. जस्ट हैव टू ऐड अ लिंक. या वी आर गोइंग लाइव. तू मेरी तन्हाई. Okay, we done. Okay, sorry about that. We gonna do. I should have like ऐसा made a playlist जिसमें नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चल, मतलब कॉपीराइट से मेरा क्या ही बिगड़ेगा. मेरा कोई ऐसा लाखों रुपए तो आता नहीं है, पैसे ही नहीं आते. तो और ये पहली स्ट्रीम है बाय द वे. तो इफ आई साउंड थोड़ा वियर्ड और सम ग्लिच हैपेंस, आई शुड टर्न ऑफ एसी. मैंने चालू किया था क्योंकि एकदम इसके साइड में तो एकदम ऐसे जनरेटर जैसी आवाज आ रही थी. बट या आई कुड हैव प्लेड म्यूजिक, बट उससे मेरे को पता है स्ट्रीम ब्लॉक हो जाएगी. तो आई थिंक, एंड आई ट्राइड गोइंग ऑन यूट्यूब फॉर सम रीजन. आई डोंट थिंक यूट्यूब इज वर्किंग राइट नाउ. आई होप ये स्ट्रीम चल रही हो. या इट इज नॉट वर्किंग. तो इट, अगर हम इस पे सर्च करें नॉन कॉपीराइट म्यूजिक. ओ, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक फॉर स्ट्रीमिंग, इट इज अ थिंग. पहले गाने का
जो भी होता है जॉनरा, माई प्लेट, माई नीली, जो भी होता है। But wait, so pause that. Yeah, better. थोड़ा सा नीचे लेके आओ। या तो हम टेस्ट करेंगे कि एक एक दिन पैरामीटर्स रिसोर्सेज पे कैसा परफॉर्म करता है। इवन दो मैंने दूसरी चीज़ें भी ट्राई किया है, स्पेशली जितनी भी मैप बेस्ड चीज़ें होती हैं, पर्टिकुलरली चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छा चलता है। एक दो दिन के लिए, बट आई हैवंट ट्राइड इट let's say at a single resource. लेकिन मैं छोटा सा ब्लॉग आप लोग सुनेंगे भी अगर तो थोड़ा बहुत बता दूंगा कि इसमें मेरे को क्या क्या लगता है। तो डेफिनेटली अगर आप गलत पता लगेंगे तो विजिट करके टेस्ट करेंगे और फिर आप मेरे को बोलेंगे। बेसिकली द सेकंड डिसाइड ऑन द लिस्टिंग, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे कि आप क्या ट्राई करते हैं कि आपको किस पे वेट करना होता है, वो सब Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, let's start. staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me मैं मेरे एंड में टेस्ट करूंगा कि कैसा परफॉर्म करता है। तो मैंने जैसे सेलेक्ट किया है आओ, ऊपर उसके बाद टेस्ट लगातार। ओके लेट्स सी। एक तो ये स्लो भी बहुत होता है तो बीच बीच में इतना वेट करना पड़ता है, बाय गॉड। नो वे मैंने कॉपीराइट फ्री है इस पे। I live inside my own world. कॉपीराइट आना ही तो ओके I'm staring at a perfect picture. I swear your mama made a winner. Look, girl, I know I'm just a sinner, but I put forever around your finger. I'm falling in and out of focus. Yeah, I swear I didn't even notice. अरे That काम this चल night रहा just है। turned to morning, and right now nothing else important. Ooh, 'cause you the moment. मैं भी बात कर रहा था और साउंड बहुत चल रहा है। The moment. I swear you stopped the time. सॉरी। हेलो
हेलो, और लो कर देते हैं. Hey God, I hope my sound is right. 1000 token used. I will start by checking the current Blender scene, then build the character step by step. Let me check the current Blender first. Oh, sorry. Let me check the current scene first, then build the character. Okay. FPS कम आ रहे हैं मेरे कैमरे में. Cause you're the moment. The moment. Scene is empty. Wow. Literally take 1.5 to like literally took 1.5 thousand tokens just to say the scene is empty. Bhai, what the fuck? आई थिंक स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे ऐसे खाली मोमेंट्स आएंगे जिसमें हम ऐसा खाली बैठे रहेंगे क्योंकि it takes shit ton of amount, like it takes so long just to like see सीन में है क्या. ओके, परमिशन क्या मांग रहा है मेरे को हमेशा. आई डोंट नो फॉर सम रीजन. ओ फॉर व्हाट द फक मैन. वेट. डैम. वेट, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ एक सेकंड के लिए. ओके. बार बार कैमरा भी क्यों होता है. मतलब एक लुक फकिंग यार, व्हाट द फक यार. मेरे को लगा इसके अंदर स्फीयर के अंदर ही डाल दिया. अरे वेट, लेट मी सी द रेंडर लुक. नॉट बैड. Wait, let's see. It looks ugly as fuck though. मतलब it's like YouTube tutorials पे वो जो लोग क्ले मॉडल बनाते हैं ना, देखिए, और एकदम उनका जो उन्होंने क्ले से बनाया होता है बिल्कुल भी आसपास नहीं लग रहा था, बट इट गिव्स द एसेंस उसका. What the hell is this? मतलब still I get कि वो what it was trying to do. वो ऐसे यहाँ पे cheeks बनाने की कोशिश कर रहा था. Same with the tummy, but instead of ऐसा सामने ऐसा परात रख दिया, it should have done is कि इस स्फेयर के अंदर एक्सट्रूड करके एक सर्कल ऐसा बनाना चाहिए था. This should have been इसी सर्कल का पार्ट, नॉट अलग से एक सेपरेट थाली लगा दी उसके पेट पे ऐसा तो करके. Not bad actually. It's shit, to be honest, if I'm being super honest. Okay, it looks ugly, but let's see agar if it can rig it, then it will be a different thing. Okay, if it can rig this, let's see. And we are right now at a level 1. तो बहुत सिंपल टास्क दे रहा हूँ मैं इसे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें. इसको हटाते कैसे हैं. Okay. Let's ask it to rig it, and then we will light it and try to improve the texture. Or I think we can ask it to make like a simple walk animation also. Character कैसा walk. Oh, what's up? Hi. Oh shit, bruh. Sorry. अभी म्यूजिक कम कर देता हूँ. अभी देखा मैंने. What's up, brothers? Let's try to add थोड़ा सा इसके अंदर rig. Okay, rig this.
and make a fully workable rig system. थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स जाएंगे. इस इज द म्यूजिक लेवल राइट नाउ अभी, या फिर अभी भी थोड़ा ज़्यादा है? आई डोंट थिंक अभी आ ही रहा है. आई थिंक स्पॉटिफाई पे जाके कम कर देते हैं यार. मुझे नहीं पता था कि लाइक स्पॉटिफाई का वॉल्यूम और ओबीएस का वॉल्यूम अलग अलग काम करता है. शी लेट्स बैक rig system that deforms it properly. Oh, I think आई थिंक ये मैंने मीम से देखा है. इफ यू राइट मेक नो मिस्टेक्स तो थोड़ा वो बेटर काम करता है. मिस्टेक इसमें आई थिंक एक ही होगा कि हमको इसमें वो रिग ऐड कर देगा. रिग इज बेसिकली एडिंग अ बॉन. ओ मैं वो तो लिखना ही भूल गया. एंड add bones for this character and make it fully workable rig system. ओ इंग्लिश खराब है बट आई थिंक वो समझ जाएगा. लेट्स सी. अभी भी नहीं आया है. शिट. हेलो. ओके अभी नहीं आ रहा है वो. इट्स अ गुड थिंग. मुझे लगा आवाज ही नहीं आ रही है. इट लिटरली टेक्स लाइक 1000 टोकन जस्ट टू सी कि चल क्या रहा है. विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग. बट आई डोंट केयर क्योंकि मेरी कंपनी का अकाउंट है. राइट नाउ इसका मेश देखें इसने कैसे बनाया. ओके. नॉट ओके. मतलब you can make this character in like less than 2 minutes to be honest. सेम स्क्वायर ऐसा स्क्वायर को स्क्वीज करा हुआ है बस. लेट्स सी. इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट लाइक टू मेक अ एक्चुअल प्रॉपर वर्केबल रिग इसके लिए. क्योंकि जिस तरीके से ये मेश है तो डिफॉर्म होना थोड़ा मुश्किल रहता है. व्हाट्स अप ब्रदर्स. मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि इतना खाली मोमेंट आएंगे बीच बीच में जिसमें खाली क्लॉड काम कर रहा होगा. Hmm, what should we do? How about side by side I make a character looking like this only, but better. Okay. Uh, we can subdivide it. Um, uh, 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 um, it doesn't make with proper edge flow, but इसमें तो इसने खाली shapes ऐड करके वैसे कर दिया है जैसे लेगोस के साथ करते हैं.
यही लाइक जो वेबसाइट पे होते हैं वी कैन ऑल्सो ट्राई अभी इतने कुछ कर रहे हैं तो आई थिंक इमेज टू एआई मॉडल्स आते हैं लाइक मेशी में यू कैन ट्राई इट समवट मेक्स इट लुक गुड तो एआई में आई हैव सीन फ्रॉम द स्टार्टिंग ना जब से वो इमेज बनाने वाला सिस्टम आया जब से डाली आया था it somehow creates like a essence of a scene like तुम उसमें क्लोजर जाओगे ना उसको स्केल करोगे तो यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है तो सेम इसके साथ भी होता है it it somehow make it look silhouette all right but उसका जो mesh का फ्लो होता है इवन दो तुम उसको एक्सपोर्ट करोगे ना फॉर एग्जांपल जी ब्रश में या फिर उसको खुद से थोड़ा रीटोपो करने का ट्राई करोगे स्टिल लाइक उसमें क्लोजअप डिटेल्स ही नहीं होते हैं यू कैन इम्प्रूव डेफिनेटली फ्रॉम बट उतना जितना मेहनत लगता है उतने में वो बंदा मेरे को लगता है स्क्रैच से ही बना लेगा तो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर नॉट समथिंग आई थिंक विच कैन रिप्लेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इट कैन हेल्प डेफिनेटली इमेज टू 3D यार इसमें लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा बहुत सारा क्योंकि आई हैव एक्चुअली ट्राइड इसमें वही ना साइन अप वाइन अप मांगते हैं ये लोग इसमें तो 5 मिनट हो गए अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा अ, 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 हम्म, हम्म, हम्म। और स्पेयर ऐड करने से अच्छा ना लेट्स ऐड अ आइकोस्फेयर एंड सब डिवाइडेड नॉट फॉरगेट shape can also add a cube mm, okay if we I think ये अप्रोच शायद कम कर जाए कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे कैरेक्टर मॉडल करे हुए आई यूजली एक्चुअली वर्क विद प्रोडक्ट्स जो कि अब भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होता जा रहा है आई डोंट एंजॉय क्वाइट एंड आई वांट स्विच टू ऐसा एनिमेशन में कैरेक्टर में बट उसमें लगे पैसे नहीं देता कोई तो इट्स बेटर कि खुद के लिए ही करो फन के लिए करो तो इट्स या अब पैसे नहीं मिलेंगे उसमें बट थिंक इसमें एक लूप कट ऐड करेंगे तो हो जाएगा या यू बट ओके लेट्स मेक बेसिक सिलुएट फर्स्ट उसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल्स ऐड कर दूंगा मैं got all the 33 character meshes are present and unpainted there's a stray cube in the edit mode I will clean अरे भाई वो मैं काम कर रहा हूँ क्या हम काम नहीं कर सकते साइड बाय साइड I actually work at a defense company who make tech for Indian Army. I do 2D and 3D visuals there. Oh, it added a rig. Oh, it says it's a IK rig. Wow. Mm, 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 mm. Let's see. I think almost 10,000 tokens तो ले ही लेगा. Mm, 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 mm. Oh, using Blender execute.
आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड कैसे काम करती है ये rig. Oh, so already in pose mode. We can try. अरे अबे कुछ किया भी नहीं अभी. आई थिंक कर रहा है. खाली rig ऐड कर दिया उसने बट इट्स नॉट पेरेंटेड टू द mesh. काम नहीं कर रहा है अभी कुछ. हाँ हाँ. Hmm, can we open a new window in Blender and work side by side, or it will trigger it? इट्स वेरी स्लो. मेरे को लगा था थोड़ा फटफट हो जाएगा बट बहुत स्लो चल रहा है तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है अभी मेरे को. एंड आई एम प्रिटी श्योर दिखने में भी काफी बोरिंग ही होगा एज अ व्यूअर. एंड you all can also give me suggestion कि what should I do इसकी जगह. मतलब इतना लॉन्ग जर्नी अभी तो काफी कुछ करना है अभी. लेट्स सी बाकी ऐसा कौन कौन से टूल्स हैं दैट वी कैन ट्राई आउट इन दिस स्ट्रीम एआई वाले. वी कैन गो टू चैट जीपीटी. वेट लेट्स गो टू चैट जीपीटी. लेट्स स्टार्ट विद उससे. लेट्स सी अगर चैट जीपीटी मॉडल बना सकता है तो देन वी शुड आस्क चैट जीपीटी ओनली कि कौन कौन से ये टॉप टूल्स हैं एआई वाले 3D के लिए. इवन आई थिंक ब्लेंडर गुरु आल्सो गिव वेरी गुड. या मैंने अपना हिस्ट्री हाइड कर दिया है जो कि किसी को नहीं पता होना चाहिए. एंड लेट्स गो इनटू टेम्परेरी चैट. दैट्स एक्चुअली अ राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. कितने साइड बाय साइड वो हो रहा है. हैव यू वर्कड इन एनी 2D एनिमेशन पाइपलाइन? नो आई हैवंट एक्चुअली. 2D मेरा जॉनरा नहीं है. आई एम एक्चुअली वर्क विद 3D. 2D से मेरा मतलब था व्हेन आई सेड इज 2D ग्राफिक्स नॉट 2D एनिमेशन. आई डू 2D ग्राफिक्स एंड 3D एनिमेशन क्योंकि स्टार्टअप है मेरी कंपनी तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग. ऐसा खुद से करना पड़ता है. नॉट विद 2D पाइपलाइन एक्चुअली. आई डू नो कंपोजिटिंग जो 2D के अंदर होती है बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स मेरा फर्स्ट सॉफ्टवेयर था. बाकी आई हैवंट. आई हैव ट्राइड CC एनिमेट एक्चुअली. CC एनिमेट एंड आई थिंक कैरेक्टर एनिमेटर कुछ तो ऐसा आता था जिससे ऑटो लिप सिंक हम यूज करते थे पहले. अडोबी सॉफ्टवेयर फॉर ऑटो लिप सिंक. या एनिमेट. अडोबी एनिमेट. या वी यूज टू वर्क विद अडोबी एनिमेट उसके अंदर कैरेक्टर्स के साथ. और थोड़ा बहुत कंपोजिटिंग वो भी कभी कभी क्योंकि जो मेरी सेकंड जॉब थी वो एक डिज़ाइन एजेंसी के अंदर थी तो वहाँ पे तो वो कुछ भी दे देते थे प्रोजेक्ट. टेम्परेचर चार्ट. ओके. लेट्स आस्क कैन यू मेक अ मॉडल. कैन यू मेक अ 3D मॉडल? ओ इट कैन. 3D मॉडल डिज़ाइन आइडियाज. और इट कैन हेल्प विद कॉन्सेप्ट. भाई तो यस क्या होता है? व्हाट यू मॉडल. ओके. स्टिल लेट्स आस्क कैन यू. ओके लेट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं. स्टाइलाइज्ड ह्यूमन कैरेक्टर. एक बेस मैश बना के देते हैं and give me that as an obj.
क्लॉड का क्या हुआ भाई? ओ इट हैज डन। लेट्स सी। बट चीजें सब कुछ हिल गई हैं। द हेल मैन। मतलब इट इट हैव डन जो मैंने बोला था। बट इसमें कुछ बचा नहीं। उसकी टांगे कहाँ है भाई? उसका मुंह यहाँ से पेट पे डाल दिया। व्हाट द हेल? व्हाट द हेली? लेट्स गो टू पोज मोड एंड सी कि रिग कैसे काम कर रहा है। ओह नाइस। मतलब इट्स फैसिनेटिंग। इट इट मतलब टेक्निकली जो मैंने बोला था वो कर रहा है। पूरा गलत कर रहा है तो। व्हाट द हेल भाई? अब मेरे को सच्ची में भी नहीं पता कि इसको ठीक करने के लिए बोलूं या फिर should we go with this only? Okay, two three things I think are working actually quite nice. आई थिंक इसको ये सब समझ में आया कि ये आंखें और इसके लिए बोन्स ऐसे ऐड करनी है। दैट इज एक्चुअली सुपर नाइस। इवन दो इट्स अ टेरिबल टेरिबल रिग, बट स्टिल लेट्स, जो भी इसने दे दिया अभी ले लेते हैं। लेट्स गो विद अदर थिंग। लॉर्ड। ओके लेट्स मूव विद अदर थिंग ओनली। मेरे को इसमें और माथापच्ची नहीं करनी। लेट्स डू। Okay, what can we do now? Can we try a walk cycle? Can you make uh मतलब आई थिंक वी कैन ट्राई टू डीबग इट, बट आई डोंट थिंक उस वो इतना वर्थ है। इतना सिंपल कैरेक्टर में अगर तुम उसको सब कुछ हलवा बना देते हो रिग करते हुए, तो व्हाट्स द इवन पॉइंट? 10,000 टोकन्स ले लिया उसने। ऑलमोस्ट आधा घंटा लगाया इसको बनाने के लिए। और लाइक इसको इसको बनाने के लिए भाई। तो आई डोंट नो। इट्स आई मैंने पता है एक रील बनाया था। इट वाज अ ट्रायल रील जिसमें मैंने ये बात किया था कि इट्स वे मोर इकोनॉमिकल एंड मेक्स मच मोर सेंस कि अगर कोई एक यू हैव अ ह्यूमन आर्टिस्ट टू मेक ऑल दिस एंड यूज क्लॉड एज एज अ टूल जो कि कॉम्प्लेक्स मैथ वाला काम सॉल्व करती है। ओके लाइक सिमुलेशन और या फिर जियोमेट्री का जो नोट्स का सेटअप होता है, या फिर डीबगिंग के अंदर बहुत 3D में तो बहुत ज़्यादा डीबग्स होते हैं। तुम्हें पता नहीं होगा। फॉर ऑल योर मैं समझा नहीं भाई। uh, तो आई वाज थिंकिंग कि एम आई सेकंड के लिए मैं ब्लैंक हो गया। या तो इसको वॉक एनिमेशन एक बार ट्राई करते हैं बनाने का। तो या क्लॉड में इट डजंट मेक सेंस। और मैंने रील देखी है कि इट्स ओवर फॉर 3D आर्टिस्ट या फिर पीपल हु एनिमेट, जस्ट बिकॉज क्योंकि क्लॉड अब डायरेक्टली विद सिंपल प्लेन इंग्लिश यू कैन मेक स्टफ इन इट डायरेक्टली इन ब्लेंडर विद यूजिंग क्लॉड, खाली टाइप वगैरह करने से। बट इट्स नो वे नियर ट्रू। नो वे नियर ब्रा। The shit it do, it's terrible. You need to know technical terms and how actually the thing work to make something useful. uh, yeah मतलब जो वाइब कोडिंग, इवन वाइब कोडिंग इज वेरी गुड इसके अंदर, क्लाउड के अंदर मैंने वो भी करेंगे आई थिंक। प्लगइन्स, कस्टम प्लगइन्स बनाएंगे। सो आई एम समवन जिसको बिल्कुल भी कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई आइडेंटिफाइड कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए जो कि ब्लेंडर के अंदर नहीं है। वेरी सिंपल सिंपल स्टफ। और मैंने वो बनाया क्लॉड का यूज़ करके, वाइब कोड करके, एंड बट इट वाज सुपर सुपर नाइस।
नो आई एम नॉट इन कॉलेज ब्रो, मैं अभी जॉब करता हूँ। थैंकफुली नॉट इन अ कॉलेज। ओके लेट्स मेक अ वॉक एनिमेशन। एंड ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री से बोल ही देते हैं कि भाई इसको रिक को इम्प्रूव करे। कैन यू मेक अ वॉक? मेक अ सिंपल walk animation. I think which is loopable. That is fair, right? If the animation is loopable. Yeah. Oh, why shit, bro? ऐसा. If I'm not in college. Actually, life gets way better after college. I used to think जब मैं थर्ड ईयर में था कि लाइफ अभी खत्म ही हो रही है, जब वो आखिरी के कुछ दिन होते हैं, but life gets way better. Financially, you are way more stable. अब तुम्हें अपने माँ बाप को पैसे के लिए मतलब पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं. You have money to do a lot of different shit. Oh yeah, what the hell, man? Okay, good. यार एक तो ये 1000 टोकन सिर्फ सीन को चल क्या रहे सीन में वो देखने के लिए ले लेता है. लेट्स सी चैट जीपीटी क्या कर रहा है. ओके, आई आस्क्ड चैट जीपीटी की टू मेक अ स्टाइलाइज्ड ह्यूमन कैरेक्टर एज एन ओबीजे. लेट्स सी इसने क्या किया. लेट्स सी. और इट डिड द सेम थिंग जो कि क्लॉड कर रहा है, थोड़ा सा इंफीरियर उसका, जो कि ये सिंपल शेप्स को बस साथ में ऐसा लगा देते हैं ये लेगो जैसा, एंड दे कॉल इट कि भाई मॉडल बन गया तुम्हारा. इट शुडंट हाउ इट वाज सपोज टू लुक. वेट रियली? कैसे इतना तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था. माई कलर थ्योरी हेल्प यू गेटिंग अ इंटर्नशिप कैसे? एक्सप्लेन इन 5 मार्क. लेट्स सी क्लॉड कहाँ तक पहुंचा. 2 minutes and hmm, till now it's terrible going. Okay, कुछ भी बढ़िया तो है ही नहीं इसमें. The videos I suggested. Oh, nice. Oh, they all nice, man. Good for you. So it's an unpaid or paid internship. That's important. Mm. Uh, okay, let's ask him कि भाई मेरे को टूल सजेस्ट करो. Okay, suggest some tools which, which uses AI and will be very useful, okay, and will reduce my workload as a 3D artist. Will be useful and name the best, okay, only the best. Name the best. Unpaid, of course. Oh, sad, but it's okay.
It just really helped you. Oh, nice man. Happy for you. You should also see Studio Binder के videos. It's more about cinema, but I think जो उसमें वो rules बताते हैं, it works and it applies to, of course, to animation also because animation is also cinema. Meshy AI, okay, ये तो लोग बहुत पैसे मांगते हैं. बहुत ही important word मैं ऐड करना भूल गया. And which are free. Blender, okay, oh thanks. Thanks, मेरे को तो पता ही नहीं था. Oh my god. Meshi AI, nah, they are not free. Triple AI. और मैं इस पे भी लिमिट मेरी रीच हो गई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं. What the hell, man? Okay. Claude is literally like taking 15 minutes just to like for this. इतना तो कुछ खास भी नहीं कर रहा वो. You know what's the best tool? The best tool which uses something near to AI is this website. Like जितने भी 3D एनिमेटर्स हैं, स्पेशली कैरेक्टर एनिमेट करते हैं, वो इस वेबसाइट को भगवान मानते हैं. एंड बाय द वे इट्स ओन्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट डेविलिश कंपनी. ओके, वेट, मैं मेरी ईमेल आईडी नहीं दिखाना चाहता हूँ. या वन ऑफ द मोस्ट डेविलिश कंपनी कॉल्ड अडोबी. बट स्टिल उन्होंने जिंदगी में एक दो अच्छे काम करे, उनमें से ये है. वो ऐसा पाप पुण्य बैलेंस करते हैं. होता नहीं है, मतलब पाप ज्यादा ही है उनके, बट स्टिल. How did I attach? You can find different videos, Tanvi, on YouTube. कि क्लॉड और ब्लेंडर को कैसे अटैच करते हैं. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. गूगल करोगे ना ब्लेंडर एमसीपी, तो एक ऐड ऑन मिलेगा जिसको यूजर्स ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू डायरेक्टली इनटू ब्लेंडर. क्लॉड का प्रीमियम ले लो. आई नो पीपल बहुत सारी वीडियोस में वो लोग बोल रहे हैं. आई हैव सीन इन्फ्लुएंसर के जिसमें वो बोल रहे हैं कि फ्री है. इट्स फ्री, बट लिटरली हाई लिखते वो खत्म हो जाएगा. स्पेशली 3D में तो आई डोंट थिंक कुछ कर पाओगे. तो यू नीड प्रीमियम. आई होप कहीं से फ्री मिल जाए आपको, क्योंकि 2,000 रुपये महीना आई थिंक इट्स लिटिल ओवर प्राइस्ड. या बेटर सिंपल. उसको बस एमसीपी को वो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है बहुत. कोई भी यूट्यूब वीडियो में आपको वो दिख जाएगा. एंड यू कैन लिटरली आस्क क्लॉड कि भाई यू कनेक्ट डायरेक्टली टू ब्लेंडर, वो खुद ही डीबग करके करता रहेगा. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. गिट चाहिए होता है, आई थिंक पाइथन सी प्लस प्लस क्या क्या चाहिए होता है, वो खुद ही इंस्टॉल करके डाउनलोड करता रहता है. Yeah, so this site I was talking about, it's called Mixamo. One of the best site if you wanna like animate a character. यहाँ पे खुद का कैरेक्टर यू कैन मेक, मतलब खुद का कैरेक्टर इन 3D सॉफ्टवेयर यू कैन मेक, और यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हो, उसको रिग कर सकते हो फ्री में. नॉट ओनली दिस, कि यहाँ पे बहुत सारी रिग कर सकते हो, बहुत सारी एनिमेशन भी है जिनको हम यूज कर सकते हैं. और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं. लाइक इफ आई शो यू, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. लाइक ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखता रहता हूँ, कोई ना कोई अपनी गेम्स या वीडियोस में यूज करता रहते हैं. थोड़ा सा टेक्सचरिंग इसमें इम्प्रूव कर दोगे ना तुम खुद से, तो बहुत सही लगते हैं. तो फ्री, लाइक दे आर फ्री, तो इतना हाई क्वालिटी नहीं होते हैं, बहुत ही लो क्वालिटी होते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन. और ओके, लेट्स सी क्लॉड कहाँ तक पहुंचे हमारे. इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 मिनट्स. 8,000 टोकन सिर्फ इस प्राउंड पे हमने स्पेंड कर दिया है, और कहीं पे भी नहीं पहुंचा अभी तक.
बट आई एम एक्साइटेड एक्चुअली बनाता क्या है। Next time, I think we should make something. इसकी जगह. It's quite boring, but it's fine. Wait, मैं एक वीडियो से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. It will help you Blender और Claude को connect करने के लिए. At least you can try free वाला ही at least start में. Claude and Blender MCP. There was one video जो कि मैंने देखी थी before starting. I think वो एडन की वीडियो थी. फॉर सम रीजन पता है यूट्यूब चल नहीं रहा है मेरे इसमें मतलब आई कांट प्ले एनी वीडियो दिस वीडियो तन्वी एक्चुअली आई सॉ दिस वीडियो ब्लेंडर और क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Okay, meanwhile I can show you one thing जो कि मैंने वाइब कोड करी थी. तो वाइब कोड इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओ क्या क्या दिखा दिया मैंने. Vibe code is the most fun thing. Coding in general is very fun actually. ये मैंने अब भी मेरे को पता चला जस्ट जब वाइब कोड मैंने करनी. आई आई हैव नो बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस. कभी मैंने नहीं सीखा है. कॉमर्स था मेरे पास वो भी विदाउट मैथ. एंड आई एम एबल टू बिल्ड दिस इज वेरी फैसिनेटिंग विद क्लॉड. तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई खुद से कुछ वाइब कोड करने का. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वेरी फन ऑल्सो. तो इन ग्राफिक डिजाइन स्पेशली पैकेजिंग और टेक्सटाइल के अंदर ना यू डोंट वर्क विद आरजीबी और सीएमवाई के नाउ. मतलब सीएमवाई के वी यूज टू बट आई थिंक पैंटोन इज द न्यू थिंग दैट वी यूज और बहुत ब्राइट कलर्स आते हैं उसमें अनलाइक सीएमवाई के. एंड मैं आई नॉर्मली डोंट वर्क विद पैंटोन. साल में एक या दो दिन होता है बट इट्स द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एवरी ईयर जब भी मेरे को पैंटून के साथ काम करना होता है. तो आई वाइब कोडेड दिस टूल. इट्स बेसिकली अ टूल जिसके अंदर यू कैन कन्वर्ट अ हेक्स कोड कलर का यू आर वर्किंग टू डायरेक्टली टू पैंटून. एंड बाय द वे फॉर सम रीजन द डेटा दिस पैंटून कोड्स ना ये कंपनी इज वर्स देन अडोबी. और इनका जो पैंटून कोर्स होता है ये इट्स नॉट अवेलेबल ऑनलाइन. मतलब कुछ कुछ वेबसाइट्स पे बहुत कम डेटा है एंड इसमें बहुत सारी ऑप्शन होते हैं. सी इज यूज फॉर पैकेजिंग, टी सी एक्स एंड टी पी जी यूज फॉर टेक्सटाइल और जो फैशन डिज़ाइन होता है. यूजुअली जो वेबसाइट्स होते हैं ऑनलाइन जिसमें यू कैन कन्वर्ट आर जी बी या फिर ऐसा हेक्स कोड टू पेंटोन सिर्फ उसमें सी अवेलेबल होता है नॉट टी सी एक्स और टी पी जी. बट फॉर सम रीज़न ये सब डेटा क्लाउड के ऊपर अवेलेबल था. तो आई मेड दिस टूल वाइप कोड करके यू कैन कंपेयर साइड बाय साइड एंड इट्स वेरी फन. लाइक धीरे धीरे लाइक दिस साइड ना इनिशियली क्लॉड ने ये बनाया था बट आई धीरे धीरे करके ऐसा slowly added all those features कि एक कलर व्हील ऐड करते हैं देन नाइट मोड्स लाइट ऐसा डे और लाइट all those features try to improve UI. Where do you work at? I work at a defense tech startup. It's actually right now it's a startup. They make tech for Indian Army, particularly anti-drone tech. The damn, it's been 13 minutes. Okay, good. No pole targets yet. I will improve the rig first. Add knee, elbows, poles. Lock unused axes, set bone colors. Okay. Add a hip sway control. That's new.
Then build the walk animation. Wow. अभी तक तो भाई ने रिग भी इम्प्रूव नहीं किया. The character don't even have like proper legs. क्या ही उसमें रिग कर रहा है भाई. Wait, let me see क्या चल रहा है. Mm, God damn, it's been 15 minutes. Do you want to become full-time creator? Actually, yes. I don't mind that. I actually wanna make a animated series of my own. Uh, Actually, the reason is उसके पीछे is I'm a self-taught designer and animator. I just wanna give back to the community. मैंने जितना भी सब कुछ सीखा है YouTube से देख के सीखा है. After Effects से मैंने स्टार्ट किया था. निखिल पवार, अगर if you are familiar with निखिल पवार. निखिल पवार is actually the reason I actually exist. क्योंकि उन्हीं का यूजुअली वो अपने वीडियो के नीचे प्रोजेक्ट फाइल के लिंक दे देते हैं फॉर फ्री. लाइक जो भी उनका ट्यूटोरियल है उसका कंप्लीटली फाइल पूरी उसको फ्री में वो ऐड कर देते हैं. तो आई यूज दैट. आई मेड माई फर्स्ट फ्री. ओ इसने बना दिया. ओके, आई मेड माई फ्रीलांस प्रोजेक्ट उसके यूज करके, उन प्रोजेक्ट्स का यूज करके. दैट पेड में 5,000 रुपीज. और उस चीज उसी उन्हीं लाइक वो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था फ्रीलांस के लिए, आई यूज दैट एज अ पोर्टफोलियो और लैंडेड माई फर्स्ट इंटर्नशिप. Yeah, so it's quite fascinating. I I have as a baseline थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके I and I actually write every day like chapter wise कि क्या है. I know roughly I have a rough concept. मैंने ऐसा notion के अंदर दो तीन stories लिख के रखी हैं. It's not fully ready ऐसा. If you are asking me कि ऐसा full concept वो है या फिर script ready है तो वो नहीं है. But या एक रफ ड्राफ्ट है मेरे पास दो तीन स्टोरीज का. Hmm. When I was working, actually, after some time, no, I left my job to do content, particularly to make a video game, and it was a terrible idea. 3 महीने के बाद मेरे को समझ आया कि भाई देयर द रीजन कि या एंड आई वाज वेरी ओवर एम्बिशियस एट द टाइम आल्सो. आई शुड चेक आउट डियर दोस्त. आई थिंक आई हैव हर्ड दिस. डियर दोस्त. वेट. I should check out Dear Dost on YouTube or Instagram. Oh, अच्छा हाँ, I have seen this. Yep, yep. I seen the trailer जो कि अभी आया. It's very good. I'm very excited. I wanna see. It's look very good. Da, 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 da. Oh wait, it's ready क्या? Let me check the pose at the frame 1 and frame 7. I mean कोई की फ्रेम तो मेरे को नहीं दिख रहे हैं. Okay, working.
Sure. Mm, if I became, that's a big thing, but I hope. Mm, According to Claude, I think it is working, but मेरे को कोई keyframe नहीं दिख रहा है. Right work at Z. There are no keyframe actually. और ये कह रहे हैं कि मैंने animate कर दिया है. Let's see. 20 मिनट तो ले लिया इसने. Mm. So yeah, how, like, what type of internship you landed? Tell me, and what you study? That is very fascinating. Are you a design student, animation student, या फिर what's happening in your all life? Frame 7 confirms. This process is very slow as I thought. I think we should directly jump into like इसके बाद ना lighting पे, then lighting के बाद क्या करेंगे? Lighting के बाद let's make custom plugins. थोड़ा बहुत plugin वगैरह बनाते हैं and plugin और geonauts इसके बाद सीधा उस पे जंप करते हैं. It's very slow भाई, जितना भी artistic shit होता है. I think block out और try कर सकते हैं. Let's feed इसको uh, रियल इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके एंड आस्क कि इसको ब्लॉकआउट बनाए 3D के अंदर. ओ यू आर अ 2D एनिमेशन स्टूडेंट, दैट्स गुड. ओह, दैट्स नाइस. डिजाइन स्टूडेंट और 2D एनिमेशन स्टूडेंट. I always wonder like how it feels to be surrounded by people who all are into like creative stuff because I too went to DU or I studied human resource management to always wonder uh, कैसा environment रहता है. Oh, it's ready क्या? Let's see. Oh, it's a loopable. It's terrible, but it's loop. It's a loop. Wow. Okay, इसको rig को हटा के देखें तो. It's terrible, but it looks fun for some reason. Uh, Wait, full screen करता हूँ मैं अभी. Hey, it can be a character, ठीक है? It can be a character किसी horror game के अंदर. What the hell, man? क्या ही बनाया है ये? If, wait, hear me out, okay? What if I delete eyes? Oh, rig delete कर दिया मैंने गलती से. Eyes, I. Okay, delete this. I think. Okay, now see, it's way better. एक चीज और कर सकते हैं इसको. I think इसका scale कम करेंगे तो it will look थोड़ा और nicer. Individual origin. Okay. L rotate. Okay, that's what I was talking about. ठीक है? You can't replace artists. You need artists to make it workable. Uh,
लुक्स लाइक अ रिटार्डेड पॉकीमोन बट ठीक है। टेल, ओ वी आर नॉट एडिंग अ टेल भाई, बहुत इसको ये बनाने के लिए है ना 1 घंटा लग गया। टेल और ऐड करो। आई एम कंफ्यूज, आई थिंक ये लाइटिंग इज वर्केबल। लाइटिंग ऐड करना इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होता है, बट आई एम जस्ट इन अ फियर कि ये लाइट ऐड करने के लिए वापस से 1 घंटा ना ले ले। आई थिंक बैकग्राउंड भी ऐड करने को बोलते हैं, ऐड कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, बैकड्रॉप। आई थिंक स्टूडियो लाइटिंग मोस्ट सिंपलिस्टिक, खाली 2 या 3 लाइट चाहिए होती है स्टूडियो लाइट को बनाने के लिए। स्टूडियो लाइट का रेफरेंस दिखाओ। स्टूडियो लाइट, आई थिंक प्रोडक्ट इज द क्लोजेस्ट जिसको समझ आ जाएगा देख के। या मतलब कुछ ऐसा, दिस इज वेरी ब्राइट बट ऐसा कुछ, नॉट अ गुड रेफरेंस बट आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओह सॉरी, आई जस्ट रियलाइज वो दिख ही नहीं रहा था। या तो दीज आर लाइक आर डिसेंट एग्जाम्पल, ऐसा कुछ सेटअप। तब वी विल आस्क कि ऐसा कुछ लाइटिंग का सेटअप बनाए 3D के अंदर। मेक अ स्टूडियो लाइटिंग सेटअप। If you ask me artistic wise, it's actually quite terrible. Uh, Technical wise, it's pretty decent. I can see it as a like a workable, very good tool. 3 point lighting, yes, ma'am, yes. Very good with the terminology. इसमें actually there is a feature, no? Light. You can turn on. You can go to preferences, add-ons. नहीं है क्या? Oh, there used to be 3 point light का ऐसा एक preset light pro. Nope. It, Blender, by the way, if you go here ना Blender की official website पे, तो people upload बहुत अच्छे अच्छे plugins मतलब add-ons, and they some of them are like very good. इतने काम की चीजें मिल जाती है ना, मैं तो ऐसा कभी कभी यहीं पे आके टाइम पास करते रहता हूँ। लाइट, 3 point लाइट, आई कैन फाइंड इट। पता नहीं भाई, होता था बट ओके, इन माय डिफेंस होता था एक टाइम पे। हाई लाइट ऐड करना इज लाइक इतना इजी काम, उसमें भी लेट मी चेक। Oh, it can be a mouse. Yeah, it can be a fat retarded mouse. Yeah, sure. Hmm, मेरी मम्मी मैसेज करके पूछ रहे हैं सो रहा है क्या? अरे मैं सो रहा हूँ तो भाई कैसे बताऊं?
Pop, pop, pop. Let me check the current scene state first, then build a full studio setup. Okay. Photo smooth was removed. Fixing the smooth shading call. फालतू चीजें कर रहा है. Ah, okay. अबे कैरेक्टर पे लाइट क्यों नहीं आ रही है बट. अबे ये कैसा सेटअप है. साइकिल्स में ऑन पर्पस आई एम नॉट डूइंग इट क्योंकि इट्स अ लैपटॉप. इतना कुछ पावरफुल नहीं है. आई डोंट वांट लैगी हो जाए. इवन दो ये हैंडल कर लेगा बट स्टिल ईवी इज ऑल राइट. इतना तो कुछ कॉम्प्लेक्स कर भी नहीं रहे हैं. अबे एकदम अटर शिट अटर टट्टी चीज बनाई है वैसे तो. ओके आई हैव लाइक आर्टिस्टिक इसको एक चीज बोलता हूँ. वेट. कैन यू वेट. कैन यू मेक इट हेलो किटी themed. ओके. मेक सेंस ना फॉर दिस स्टाइल. हाँ. खाली लाइटिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हैं अभी तो हम. Let's go to pop, 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 pop. Yeah, brothers. Mm. Yeah, and I think you can all like give me advice ki which type of video I should make. So I have an idea ऐसा vision कि I should wait जब तक 10,000 ऐसा followers हो जाते हैं उसके बाद I should like start making animated जो series मैं सोच रहा हूँ. आई स्टार्ट मेकिंग इट एंड फिर उसको डॉक्यूमेंट करेंगे बट तब तक थोड़ा सा इन जर्नल एनिमेशन के बारे में डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं. तो लाइक आई जस्ट वांना लाइक गेट आइडिया फ्रॉम समवन जो कि डिज़ाइन या एनिमेशन कर रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू प्रेफर लाइक व्हाट शुड आई मेक. काफ़ी पक रहा हूँ मैं ये जितना वेट करने वाला पीरियड आता है इसमें. ओके.
Current audience really like action animation. Yeah, they do actually. I think all the animation you've seen, jitne bhi last year, which have been popular, every animated series or like movie had like action somehow. But there are exceptions. I think common side effects में कोई I think नहीं है action. I think जितना I remember, and it was quite popular. Common side effects. I think you need thrill. I think people like thrill or suspense animated चीजों के अंदर. But yeah, action is a big part of animation for sure as a genre. Mm, you're not into animation, though. What the hell, man? They're also used to sing Bollywood themes in terms of cinema, so they also like drama and mystery. Hmm, interesting take. They're also used to sing Bollywood themes in terms of cinema, so they are also like drama and mystery. Hmm. You know who does mystery the best? Ekta Kapoor. Ekta Kapoor do mystery best. Have you seen Suspense उसके उसमें? I used to fucking love that भाई. उनका editing style. Yeah, yeah. Vatsal indie series actually based on horror and drama. Uh, and I also like how they use city as a character. I'm a big fan Vatsal के काम का. I thought I will I tell other than animation, I in general like the things I talk about can be applied to anything. Okay, it can be applied to design, irrespective of what field of design. It can be applied to films also. Uh, and I have ठीक है बाकी वीडियो भी है journal stuff पे design stuff पे ऐसा a particular I'm not targeting animation, I'm just collecting ऐसा design animation bros from ऐसा creative field. That's my target audience. That's I actually hope to get people who are interested in digital art. With that color theory reel, actually, a lot of people who do traditional art actually followed me. मतलब a lot तो नहीं मतलब ऐसा मतलब थोड़े बहुत. And I have no idea traditional art के बारे में. Still, they were following me. It's very fascinating how internet works. Mm. By the way, that video जिसमें I talked about color theory, I made a trial reel of the same topic before that, जिसमें उसके two versions थे, okay? एक में बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने explain किया था color theory को. I wasn't suggesting video, I actually myself just explained the whole thing खुद से point to point, and it did terrible. It did terrible. It performed like shit. उसको like 1000 view आए होंगे. एंड देन मैंने उसका कुछ ज़्यादा ही सिंपलर वर्जन बना दिया था जिसमें फट 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 मैंने सब कुछ बता दिया ना. आई वाज ट्राइंग टू डू कि पार्ट्स में बन जाएगा पार्ट वन पार्ट टू ऑफ कलर थ्योरी. तो इंस्टाग्राम उस चीज़ में इट्स क्वाइट वियर्ड. जो जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं, उसमें कुछ एंगेजमेंट नहीं आता है. फिर मैंने सिंपलिस्टिक किया तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा उसमें आ रहे थे व्यूज़, और वो उसको काफ़ी ज़्यादा सेव भी हो रहा था. सेव का मतलब दिखता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग सेव भी कर रहे थे. बट उसमें कमेंट्स वर ईदर सो एक्सट्रीम. ईदर दे वर लाइक कि वाओ
मैंने आज की बेस्ट चीज देखी, थैंक यू फॉर दिस, इस कंटेंट के लिए। एंड द अदर पीपल वर लाइक, भाई तेरे को कुछ नहीं पता कलर थ्योरी के बारे में, यू डोंट नो शिट। विच मेक सेंस, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, बट द रील परफॉर्म बेटर। देन मैंने कुछ एक मीडियम पॉइंट किया, जो रील अपलोड करी है, जिसको आपने देखा, एंड इट परफॉर्म डिसेंट। उसमें मैंने आई जस्ट सजेस्टेड कि भाई मैंने ये दो वीडियो देखे हैं, ये जाके देख लो। इंस्टाग्राम ऐसा कंटेंट, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। आई डोंट नो व्हाट I'm working, okay. Tanvi says I'm working on stuff and we making action drama, medieval history versus present day Indian story, sort of vertical series. Oh, vertical series, nice. So I think people might open up new type of animation. Yeah, sure, dude. जो भी whatever makes you feel now कि this topic I'm super interested in, उसके बारे में बनाओ. I think history in general is very fascinating. आई तो लव जो यूट्यूब पे भी जो एनिमेटेड चैनल्स हैं जो हिस्ट्री सिखाते हैं, व्हाट्स द नेम, जो एक क्यूब करके ये चैनल है ना यूट्यूब पे, विच टीचेस यू वर्ल्ड हिस्ट्री इन अ वेरी फनी वे एक्चुअली। मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है, वो बहुत सही है भाई। वन ऑफ माई फेवरेट चैनल। या वट एवर मेक्स यू फील ना कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, जस्ट मेक अ स्टफ अबाउट इट, इवेंचुअली विल फाइंड पीपल, और व्हाट द हेल, ऑलवेज अलाउ भाई। भाई इतना तो कुछ किया भी नहीं। ओ इस ए हेलो की टीम बना दिया, ओके। आइस गैप कर दिया, बट वो भी ऐड किया है, वाओ। वेट, आई विल आस्क हिम ओनली। भाई रेंडर करके क्यों दिखा रहे हो? वेट, मैं खुद से ही डिलीट कर देता हूँ ये सब राइटिंग, ओके। अबे, a lot of indie animators are working on cultural nuances and making short films about their cultures, and they are really good. Yeah, अरे शेयर में some links ना उन इंडी एनिमेशन का। I usually see Kerala based artists के animation उस type के, and they are very good. South side तो is very यार creatively कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं वो लोग। अरे I will check out. The Hello Kitty character is looking great. Let me do a full EV render. Okay, I am pausing this भाई, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ये, इतना तो कुछ खास भी नहीं किया। Let's change इसको paste clippings. Wow. बहुत ज़्यादा harsh lighting करी है यार इसने। Yeah, lighting. By the way, lighting. To the Gupta ji, lighting की video you should also check out.
Uh, if I have to give verdict on this, भाई artistic चीजों में modeling और texturing तो it's like terrible, terrible, terrible. Let's do थोड़ा सा complex stuff, थोड़ा सा वो वाला जो किसी को करना पसंद नहीं होता है. Let's make add-ons, okay? Uh, ब्लेंडर की भी नई विंडो बनाते हैं. ये तो बिल्कुल मजा नहीं आया. तो okay, suggest me some add-ons, cool cheese that you wanna see बनाते हुए. सिंपलेस्ट चीज से शुरू करते हैं. लेट्स आस्क हिम टू मेक डुप्लीकेट्स ऑफ दिस, ओके. 3D के अंदर आई थिंक वी स्कैटर इट. तो लेट मी शो यू विद द एग्जांपल, ओके. तो इन 3D वी डोंट मेक इंडिविजुअल, ऐसा कोई ऐसा ग्रासलैंड का हम अगर सीन बना रहे हैं. ओके, बाय बाय. ओ यार, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ग्रास के सीन के बारे में. तो वी डोंट इंडिविजुअली पुट एवरीवेयर ग्रास. बहुत ज़्यादा अगर हम ऐसा खुद से करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होगा, बहुत ज़्यादा सरदर्द वाला काम है. और इट्स वेरी सिंपल बट लाइक टीडियस वर्क, ओके. ऐसा मैनुअली एक एक जगह पे खुद से टू पुट दिस एसिड. तो व्हाट वी यूजुअली डू, वी मेक अ एग्जांपल. एक ऐसा हमने ग्रास का सेट एसिड बना लिया एंड वी जस्ट हैव टू प्लेस इट मैनुअली, इधर इधर इधर. बट वो प्लेस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाएगी. तो व्हाट वी आस्क कंप्यूटर, अवर पीसी, अवर जो भी पाइथन का लॉजिक चल रहा है जो भी, तो खुद से स्कैटर कर विद यूजिंग योर सेंस ऑन द प्लेन. तो वी विल आस्क द सेम. इमेजिन दिस इज द लैंड एंड ये हमारा ग्रास का एसेट है. मैनुअली एक एक करके हम ऐसा प्लेस करेंगे, ठीक है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Oh, so what we do, we scatter it using some complex stuff. I think उसके बारे में नहीं बात करते हैं. तो we will ask कभी क्लाउड को कि वो करे इसे. मेरे को भूख लग रही है. Which one? Oh, which one are the short films, like indie films? Give me the name or link, no? I can't see. ऐसा. Okay, let's ask it to scatter it. Oh, Control Z. Let's make a geo node system. Scatter it. The plane. It should be uh share the link above. I can't see. I can't see the links, brother. uh अच्छा, घुघुटे की माला तो देखी है मैंने, हाँ. घुघुटी की माला, सॉरी. That I haven't seen. Fool the by Karthik Mahajan. We can check out right now. I think stream करते हुए ना, for some reason काम नहीं कर रहा है. Let me check. Incognito में काम करता है क्या? Fool the by Karthik Mahajan आ गया. It's a trailer.
बहुत सारी जगह पे क्या क्या चल रहा है भाई। हाँ। ओके। इस दिस द वन? क्योंकि ये तो ट्रेलर है ब्रदर। अरे ये तो यार। पता है, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिगार्डिंग दिस। तो व्हेन आई एक्चुअली यूज्ड टू लिव इन मुंबई बिफोर दिस, एंड मुंबई में एक अंधेरी में एक फेस्टिवल हो रहा था जहाँ पे लोग इंडी शॉर्ट फिल्म्स ऐसा प्रीमियर कर रहे थे। इट वाज अ सिमिलर फेस्टिवल, ठीक है। एंड आई सॉ इट पेटीएम इनसाइडर पे। तब पेटीएम इनसाइडर वाज अ थिंग बाय द वे। डिस्ट्रिक्ट ने उसको परचेज नहीं किया था। uh, और वहाँ पे बहुत सारे लाइक फेमस फेमस पीपल वर कमिंग। आई डेंट न्यू एट दैट टाइम, लाइक आई वाज वेरी फेमिलियर विद इंडिया एनिमेशन के सीन थे। सो आई वेंट देयर, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत लेट हो गया था एंड मेरे पास टिकट नहीं था। बाहर एक भैया बैठे थे। दे वर लाइक कि ठीक है, इट्स ओके अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है। नो, इट वाज एन एनिमेटर्स गिल्ड। इट वाज एक्चुअली नेट के स्टूडेंट्स का कोई तो प्रीमियर था। वो सब अपनी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट को वो कर रहे थे, वहाँ पे प्रीमियर कर रहे थे। आई वेंट देयर, आई sat next to a dude who had a goatee, okay? And I reached there very late. और जब मैं वहां पे पहुंचा तो ऑलमोस्ट वो सब कुछ खत्म हो गया था and सिर्फ एक लास्ट फिल्म बची हुई थी। एंड आई while sitting next to him, लास्ट फिल्म क्या बची हुई थी, लास्ट फिल्म का एंडिंग चल रहा था। एंड सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, आई आस्क्ड हिम, भाई कि ये खत्म हो गया क्या सब? एंड ही वाज लाइक, या अभी तो क्यू एन ए चलेगा। एंड व्हेन दैट एंडेड, क्यू एन ए एंडेड, दैट गाय केम जो कि क्यू एन ए कर रहा था, दैट होस्ट। वो आके उस बंदे को जो मेरे साइड में बैठा था पानी ऑफर करता है एंड वो मना कर देता है। एंड मैं ऐसा बेशर्मो जैसा हाथ आगे करता हूँ, कहता हूँ मेरे को दे दो। बाय द वे, दैट डूड हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी वाज देव ज्योति साहा। उनको ये कभी पता नहीं होगा, बट या, इफ आई एवर गेट अ चांस टू मीट हिम तो मैं उसको बताऊंगा, बेशर्म आदमी जो आपका पानी ले लिया था जिसने, वो मैं ही था। मेरे को बहुत भूख लग रही है भाई। I think I probably gonna make a reel about this Claude का। इट्स वेरी यार, थोड़ा सा है ना। दैट्स द थिंग, ब्लेंडर के ऊपर कंटेंट मैंने ट्राई देखा है जितना भी। ब्रो, यू नो देवज्योति साहब पर्सनली? डैम, हाउ लकी। या, आई नो। इट्स फनी एंड ऑकवर्ड। हाँ, probably gonna make a reel about this यार। सीधा मजा नहीं आ रहा है इसको बिल्कुल भी काम करके। I thought it's actually artist friendly, user friendly. It is user friendly. मैंने गलत वर्ड यूज किया। It is user friendly, but not artist friendly at all. Like in a, like if you think about this in actual production, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि 20 मिनट तुम बैठे रहो और चेक करो। आई थिंक बेस्ट यूज केस इसका वो हो सकता है कि फाइल के अंदर कोई बग आ गया है
एंड यू कैन सबमिट द फाइल और इससे बोल सकते हो कि भाई फिगर आउट करो कहाँ पे क्या चीज़ लैग कर रही है। एंड वो भी मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया हुआ है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ये बार बार बोलता है मैंने फिक्स कर दिया, एंड यू ओपन द फाइल एंड इसने कुछ फिक्स नहीं किया होता है। एंड पता नहीं कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस है जस्ट से कि हाँ मैंने फिक्स कर दिया है, एक्चुअली में फिक्स कुछ नहीं हुआ होता है। तो अगेन एंड अगेन यू हैव टू बी लाइक भाई फिक्स नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है, एंड इट ट्राई टू फिक्स इट। इवेंचुअली इट डज, बट इट्स जस्ट लाइक कि राइट नाउ जो इसका स्टेट है इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकली artist friendly. Oh, you work with GoPro Studio? Are you some big level animator? Big stuff, brother. Oh, okay, bro. I'm gonna peace out. Let's end this stream. Oh, nice. Okay, then I'm gonna end this stream. I'm probably gonna make reel about it instead of like stream. Next stream करते हैं कभी या तो कल करते हैं and we should make something. मैं डिस्कॉर्ड भी बना लेता हूँ एक, उसमें लाइक आई विल ऐड ऑल द पीपल इंस्टेड ऑफ दिस, लाइक एक्चुअली कुछ मॉडल वगैरह करते हैं, कुछ कैरेक्टर एनिमेशन या फिर कुछ नया सॉफ्टवेयर सीखेंगे, तो इट विल बी मच मोर फन यार। इसमें मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। टेक्निकलिटी वाइज तो आई थिंक मैं पहले भी बहुत कुछ ट्राई चीज़ें टेस्ट कर चुका हूँ, बट या